Hello everyone and welcome to our first episode of IEEE podcast series. I'm Sumedha Holkar and we are excited to have Mr. Aryan with us today, who will be sharing his journey and insights on how IEEE can benefit students both academically and professionally. If you are curious about how IEEE can benefit your skills, career and network, you are definitely in the right place. So, Aryan, shall we start? Yeah, sure. We are all absolutely good to go. So, for someone hearing about IEEE for the very first time, how would you explain about what IEEE is and why it matters? All right, sure. So, first of all, thank you so much, Acropolis, for inviting me for this podcast. And also, thank you, Sumedha, for being an amazing host. So, to make it easy for everyone, IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineer. First thought, you might understand that it's only for electrical and electronics engineer, but it's a wrong concept. IEEE is the biggest community of engineers around the globe working in all specific domains. It's an organization roughly around 140 years back, having more than 500,000 members. So मैं generally एक line में summarize करता हूँ सबके लिए कि it's your home away from home. It's your identity outside your college. एक इतनी बड़ी community जिसका आप part हो, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके फाउंडिंग मेंबर्स एडिसन, ग्राहम बेल, मार्कोनी थे. It's a community that gives you knowledge, that builds your community, that helps you in your career progression. Oh, so yeah. And what motivated you to join IEEE? Okay, so it dates back to I think 2020. हमारे सीनियर्स हमारे लिए एक सेशन ले रहे थे एंड दे स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप में से वाईफाई कौन कौन यूज करता है. We all raised our hands. Then he said कि बताओ वाईफाई बनाया किसने है. We were like कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. Then उन्होंने इस क्वेश्चन से हमें रीडायरेक्ट करा वाईफाई स्टैंडर्ड्स की तरफ. अब देखो क्या होता है, सपोज सुमेधा को यूज करना है अपना फोन यूएस में जाके, तो वो वहां के वाईफाई से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है किसी ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में, आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्टैंडर्डाइजेशन अराउंड द ग्लोब. वी फॉलो सम स्टैंडर्ड्स. So like IEEE Wi-Fi, like the Wi-Fi works on IEEE standard 802.11. It was developed by scientists around the world जो IEEE से बिलोंग करते थे. तो जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी, आई वाज रियली क्यूरियस कि इंजीनियरिंग के अंदर इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा एक रिसर्च मार्केट है कि यू आर मेकिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर रनिंग द होल वर्ल्ड. नॉट जस्ट दिस, जब मैंने एज अ वेरी बिगनर बैक इन 2019-2020 जब मैंने सुना कि आप IEEE के मेंबर बन के यू कैन गेन एक्सेस टू योर प्रोफेशनल ईमेल, सपोज इट्स abc@ieee.org. I was very curious कि you are getting an email that is very customizable, and not just this, you get monthly subscriptions to बहुत सारी magazines that can help you keep yourself updated with the current information. And उसके बाद slowly and gradually हमें बहुत opportunities के बारे में पता लगा, volunteering के बारे में पता लगा, leadership के बारे में पता लगा, scholarship के बारे में पता लगा, and वो धीरे धीरे करते हुए connection आगे बनता चला गया था. So this is what that motivated me, and this is what that keeps me motivated being a member of IEEE. As you told that IEEE is not only about electronics and electrical engineers. So, what makes IEEE different from other technical and student organizations? Okay. मैं पता इसका कैसे आंसर देता हूँ. जनरली आप सबने गूगल स्टूडेंट डेवलपर्स क्लब्स के बारे में सुना होगा. तो बेसिकली गूगल एक हेडक्वार्टर है अमेरिका के अंदर, यूएस में, एंड उन्होंने छोटे छोटे चैप्टर्स खोल रखे हैं एंड इन ऑल द कॉलेजेस, एंड दे ट्राई टू ब्रिज द गैप कि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स गूगल की वर्किंग से कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं. तो सिमिलर वे में IEEE इज हेडक्वार्टर्ड इन यूएसए, एंड उन्होंने छोटे छोटे स्टूडेंट चैप्टर्स खोल रखे हैं ऑलमोस्ट हर कॉलेज में अराउंड द वर्ल्ड. And in order to bridge the gap with knowledge transfer के लिए, there are members, there are senior members, there are industrialists, there are academicians जो वो एक knowledge flow को maintain करते हैं. So I feel this is what that makes IEEE different. That what
this is what that makes IEEE different from other student organizations. जब आप किसी अदर एक स्टूडेंट कॉलेज कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, यू आर रिस्ट्रिक्टेड विद इन द कॉलेज बाउंड्रीज. बट IEEE का मेंबर बनते यू गेन एक्सेस टू 500,000 members. Like there is something called as Collaboratech, which I say it's the Facebook of IEEE, जहां पर आप सब IEEE लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. And not just this, there are so many other resources. So it's like a bunch of resources that you gain access to being an IEEE member. And एक बहुत interesting story है. I got opportunity to visit Belgium for my internship. I landed in that country, and first thing I did was searching about IEEE student members nearby me. So I feel like, as I mentioned, it's your home away from home. You land in a country, you don't know their language, you don't know their food, but you have a ready-to-use network that you can probably gain access to. So ये बहुत सारे ऐसे points and it makes IEEE different from other student communities. Oh, and also you mentioned that in 2020 your seniors told you about IEEE. So how IEEE helped you grow professionally and personally? Okay, so it really opened so many doors for me, if I would be very honest. I generally say IEEE provides you learning beyond boundaries. It's not like you are restricted within Indore, within Bhopal, within MP, or within India. It open gates to so many opportunities around the world. ऐसे बहुत सारे instances रहे हैं जिसमें I felt कि I have been grown personally and professionally because of IEEE. Like I often visited different conferences. I often visited different expos and exhibitions where I got an opportunity to connect with industrialists, academicians, and so many other people. And what I got to know is वो इतना सारा काम कर रहे हैं and there are so many opportunities that they can provide you. So it's like a connected chain, connected dots जिसका आप access ले सकते हैं. Like जब मैं चेन्नई गया था, I visited Chennai for one of the guest talks. I visited Japan for one of the conferences. तो ये एक्सपोजर आपको एक इतना ओवरऑल एक हेल्प करते हैं डेवलप करने में, नॉट जस्ट पर्सनली बट इंटरपर्सनली ऑल्सो. ऑल्सो IEEE के अंदर जब आप एक हायरार्की को फॉलो करते हैं, लाइक यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स राइट नाउ, तो यू मस्ट बी वॉलंटियरिंग विद इन योर कॉलेज. देन जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं, यू बिकम अ YP, यंग प्रोफेशनल. So you get opportunities to be part of SYP initiatives, student young professionals. तो वो अपॉर्चुनिटी जो आपको एक लीडरशिप स्किल्स इम्पार्ट करती हैं, जो वो आपको कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल ग्रोथ. Also, like if I would say in terms of personally and professionally, the communication skills that I got and the leadership skills that I got. Also, I was part of newsletters, the content writing skills that I got. So it made me realize कि इन opportunities का, इन skill set का भी बहुत एक true potential है. Also, personally and professionally के terms में एक और छोटा सा point add करना चाहूँगा. A few months back, IEEE Women in Engineering published an article. It was like distinguished volunteer article. And back in 2022, I was one of the honorable mention for IEEE Women in Engineering Inspiring Student Member of the Year Award. It's like globally किसी एक दो बच्चों को मिलता है. And I think I was very much fortunate to being one of the first male candidates to win that award. It's like you are breaking. Congratulations for you that. Yeah, thank you. So it's like you are breaking clutches, you are breaking barriers, you are crossing the boundaries. And you are breaking the norms कि IEEE Women in Engineering is only for women in engineering. Rather, it's for everyone and anyone who wants to empower women in the STEM domain. And so many sessions that I'm invited to, like one of the sessions is this only. So it's also a learning opportunity for me as well. So it's like growing journey in terms of personal grounds and professional grounds. Oh, so in short, you are telling that IEEE helps us come out of our comfort zone, right? Exactly, yeah. And also how IEEE can help students if they are not really from a core technical background.
Okay, from a non-technical background. Yeah. All right, got it. So अभी मैं कुछ टाइम पहले AITR ही आया था and I showed some of the slides जहाँ पर there was my team standing in SRM Chennai and I focused upon one person, Nikki, and he is creating an ecosystem for changing the farmers, for changing the सब्जी के जो vendors होते हैं, vegetable vendors, उनका domain. So it's like आप सिर्फ एक technical exposure ना लेके आप एक नॉन टेक्निकल एक्सपोजर भी लेते हो यू कैन गेन एक्सेस टू IEEE entrepreneurship network जहाँ पे यू कैन लॉन्च योर ओन स्टार्टअप्स यू कैन अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ स्टार्टअप एंड नॉट जस्ट दिस रादर ये जो मैं स्किल्स पे फोकस कर रहा हूँ कि आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो आप लीडरशिप स्किल सीख सकते हो आप कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल सीख सकते हो दे कैन ओपन योर avenues फॉर मैनेजरियल रोल्स ऑल्सो MBA वाला वर्टिकल या बाकी सब जो नॉन टेक्निकल वर्टिकल्स होते हैं तो आप इन सब डोमेन्स को भी एक्सेस कर सकते हो एंड 21st सेंचुरी में मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि 21st सेंचुरी में इट्स नॉट लाइक सब पैसा पैसा रादर व्हाट आई से इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ अगर आपके पास Yeah. एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है आप उसको ऐसे मोल्ड करो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार हो तो वो अपॉर्चुनिटीज तैयार करने के लिए IEEE provides you a platform. So be it technical or be it non-technical, any type of roles, you are ready to go in the market. So IEEE provides platform for like every background, or we can say. Exactly. क्योंकि एक बार I was a part of R10 team, Women in Engineering, and you would be astonished to know जो हमारी लीडर थी, the chairperson of that team, was a medical professional. He was from biotechnology and medical वाला domain. क्योंकि उनको मेडिकल इतना अच्छा लगता था शी ट्राई टू पुट एफर्ट्स कि हम मेडिकल डोमेन में टेक्नोलॉजी को कैसे इम्बाइब कर सकते हैं तो मेडिकल का तो कोई टेक्निकल से कोई भी रिलेशन नहीं है बट इट्स लाइक क्योंकि आपके पास एक कम्युनिटी एक्सेस है अगर आपके पास ए स्किल है तो यू कैन फाइंड अ पर्सन हु हैज बी स्किल क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी है एंड यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ इट Yeah. And also, many students aren't aware that IEEE offers grant and scholarship. Could you tell us what kind of financial opportunities IEEE provides? Okay, so regarding grants and scholarships, आप सबने रेम स्कॉलरशिप के बारे में सुना होगा रिचर्ड ई मर्विन स्कॉलरशिप इट्स प्रोवाइडेड बाय IEEE कंप्यूटर सोसाइटी एंड इसके लिए व्हाट आई से इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई इज थर्ड ईयर जिसमें आपको लाइक ये 2 बार ओपन होती है ईयर के अंदर एंड इट्स लाइक आपको $1,000 मिलते हैं अनआस्क्ड दैट यू कैन probably spend on your education that you can probably spend on buying some gadgets for you that can help you in upliftment of your professional domain and it's just one of the scholarships that I've mentioned IEEE India Council एक पी छाबरिया अवार्ड निकालती है which is I think more than 1 lakh के अराउंड का स्कॉलरशिप अमाउंट जो एक गर्ल कैंडिडेट को मिलता है जिसमें आप फर्दर उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए ऐसे ही IEEE इंडिया आई थिंक इट्स IEEE इंडिया फिलेंथ्रॉपी सोसाइटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिन्होंने अगेन कुछ सर्दर्न बेल्ट्स के लिए स्कॉलरशिप निकाली थी जहां पर स्टूडेंट्स जिनके पास नॉन एक्सेस गुड अपॉर्चुनिटीज का दे कैन अप्लाई फॉर दैट एंड गेट द स्कॉलरशिप्स अदर देन दिस IEEE वुमेन इन इंजीनियरिंग की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं IEEE पेस पावर एनर्जी सोसाइटी की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं एंड IEEE एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारी ग्रांट्स निकालते हैं इसके साथ साथ आप जिस सेक्शन का पार्ट है वो सेक्शन के बहुत सारे कॉल्स आते हैं ग्रांट्स के लिए आपने IEEE साइट का नाम सुना होगा ह्यूमैनिटेरियन टेक्नोलॉजीज में जो काम करते हैं उनके बहुत सारे ग्रांट्स आते हैं जिसके थ्रू आप उन ग्रांट्स को एक्सेस कर सकते हैं and you can make some projects out of it. So it's like you have to remain connected with the opportunities that you are a part of. Maybe if you need, I can just share some links with you that I'm a part of, some of the WhatsApp groups. And उसके अंदर हर दिन कोई ना कोई ग्रांट कोई ना कोई स्कॉलरशिप आ रही होती है that you can remain yourself updated to. And also, have you ever applied for grants or scholarship? Yeah, so what I feel is कि
जो मैं आपको बता पा रहा हूँ इट कम्स क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है, नॉट जस्ट विनिंग बट ऑल्सो रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो इट्स लाइक कि एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि क्या क्या नहीं करना। क्योंकि जो अगर आप सपोज अगर आपने बहुत सारी चीजें लिख दी एंड वो एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, बट अगर आपको ये पता हो कि ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी, तो यू हैव बेटर चांसेस टू गेट दैट स्कॉलरशिप। IEEE REM is one of that. Again, IEEE Inspiring Women in Engineering, Women in Engineering Inspiring Student Member of the Year Award is another example. Not just this, तो IEEE की बहुत सारी opportunities मैंने tap करी, like in early months of 2025, I got opportunity to visit the IEEE Honor of Fame. It's like सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जिनको मेडल्स दिए जाते हैं। IEEE started this initiative कि वहां पर वो यंग प्रोफेशनल्स को कॉल कर रहे थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ताकि वो वाईपीस कनेक्ट कर पाए डायरेक्टली उन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए द टाइप ऑफ वे यू हैव टू राइट द आंसर, द टाइप ऑफ वे यू हैव टू मेक योर पोर्टफोलियो, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। तो इट्स लाइक मैंने खुद भी बहुत सारे ग्रांट्स लिखे हैं अपने स्टूडेंट टेन्योर में, अभी तक भी लिखते हैं। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स के लिए भी अप्लाई किया था, काफियों में रिजेक्शन आया, काफियों में एक्सेप्टेंस आया, बट इट्स लाइक अ लर्निंग जर्नी दैट यू गो थ्रू। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ अवार्ड्स आर अ बाय प्रोडक्ट of the impact that you have created. So focus on the impact firstly, focus on the numbers. Numbers as in आपने कितने लोगों को impact किया है, how many people, how many students have been impacted through you. Awards are a byproduct of that. And since we know that IEEE is an international organization, how does IEEE membership add value to a student's resume or career profile? As a IEEE member, I'm asking you, and please answer it. Okay, sure. So मैं भी कल ही एक सेशन ले रहा था सेम टॉपिक अराउंड एक कॉलेज में। तो इट्स लाइक अगर आप एक नॉर्मल सीपी देखो, उसमें जनरली लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, उनका एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस एंड उनके कुछ अवार्ड्स। अब अगर आप एक IEEE मेंबर हो, सबसे पहले तो आपका सीवी टॉप से ही चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी जो ईमेल आईडी आती है इट बिकम्स लाइक sumedha@IEEE.org। वहीं पर ही वो गेम चेंज हो गया, क्योंकि रिक्रूटर कैन कनेक्ट इतने सारे सीवीज में से दिस पर्सन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल आईडी। और मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज यू आर ए टेक्निकल पर्सन, यू विल बी अप्लाइंग फॉर टेक्निकल रोल्स, तो पीपल डू नो व्हाट IEEE इज। एंड आई हैव सीन केसेस जहां पर कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो जाता है कि अच्छा यार मैं भी स्टूडेंट था, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट में। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। नॉट जस्ट दिस, जब आप इन एग्जीबिशंस, इन कॉन्फ्रेंसेस या कई बार सेक्शन कांग्रेस होती है, जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको एक नेटवर्क मिल जाता है लोगों का, एंड वो नेटवर्क आपको हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में। सपोज अगर कोई सीनियर मेंबर है, कोई इंडस्ट्री का, दे डायरेक्टली कॉल यू कि सुमेधा व्हाई डोंट यू कम अस एंड जॉइन इंटर्नशिप फॉर अस। तो इट्स लाइक आपका एक्सपीरियंस सेक्शन भी बन रहा है आपके सीवी में। इसके अलावा जो आप ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हो, साइट की या बाकी सब सोसाइटीज की ग्रांट्स, उसके थ्रू आप ग्रांट एक्सेस करके आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आपका प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन भी चेक मार्क हो गया आपके सीवी में। देन आपके जो कॉन्फ्रेंसेस का एक्सपीरियंस होता है, जो आप रिसर्च पेपर्स लिखते हो कई बार, तो आपका रिसर्च पोर्टफोलियो भी थोड़ा थोड़ा बन जाता है। एंड लास्ट में जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, एंड इफ यू हैव डन गुड वॉलंटियरिंग वर्क, देन यू ऑफन गेट दोस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स। तो इट्स लाइक आपका अकम्प्लिशमेंट वाला सेक्शन भी तैयार हो गया। तो कंसीडर एक नॉन IEEE स्टूडेंट जब एक IEEE स्टूडेंट को अपने आप से कंपेयर करता है, तो जो IEEE स्टूडेंट के रेज्यूमे में जो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दे मेक देम स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। Okay. बहुत सिंपल सा, बस आपको कनेक्ट करना है डॉट्स को। Oh, okay. So IEEE basically helps grow ourselves in our career, right? यप एग्जैक्टली, क्योंकि करियर देखो, करियर की रिफ्लेक्शन होती है आपका सीवी, और सीवी में जब आपके पास हर सेक्शन में इतने सारे पॉइंट्स है मेंशन करने के लिए, इट बिकम सो मच इजी। Our CV will be highlighted. या एग्जैक्टली, आपके पास लीडरशिप रोल्स भी है। I still remember when I was making my raw CV का draft back during my 3rd or 4th year, it was like 3 या 4 pages का CV.
एंड मेरे प्रोफेसर मुझे पोक कर देते, आर्यन रिड्यूस इट टू वन पेज, रिड्यूस इट टू वन पेज और टू पेजेस, एंड आई इसमें से रिमूव क्या करूं मैं? तो इट्स लाइक आपके पास देयर इज सो मच ऑफ फॉर यू ऑन द प्लेट, यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू जस्ट मेंशन इन योर प्रोफाइल्स. Okay. And also, how students can make most of their IEEE membership? इंटरेस्टिंग. सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि जब आप मेंबरशिप लेते हो, गेट मेक योर ईमेल आईडी, क्योंकि इट्स लाइक आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन टैप. हाउ स्टूडेंट्स कैन मेक मोस्ट ऑफ देयर IEEE मेंबरशिप. सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी रेडी हो चुकी है, परफेक्ट. देन ज्वाइन योर IEEE स्टूडेंट ब्रांच, कंट्रीब्यूट एक्टिवली टू द प्रोजेक्ट्स. जब आप जूनियर ईयर्स में होते हो अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, try to contribute to the projects and try to make the projects जो hackathons के लिए select हो सके. Not just this, जो बाकी colleges के अंदर जो events होते हैं, try to become a part of those type of events, ताकि आपके पास एक continued cross collaboration opportunities भी रहें. फिर आप सेक्शन का जब सेक्शन के opportunities को टैप कर लेते हो, try to tap into IEEE इंडिया काउंसिल की अपॉर्चुनिटीज. वहां के हैकाथॉन्स में जाओ, स्टूडेंट समिट्स में जाओ, जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस होती है उनके अंदर जाओ. Yeah. फिर जब आप अपने थर्ड ईयर के अंदर आते हो, ट्राई टू सीक अपॉर्चुनिटीज, ट्राई टू सीक लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज इन योर सेक्शन और इन योर इंडिया काउंसिल. लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज से मेरा मतलब है ट्राई टू बिकम लेट्स से नेटवर्किंग कोऑर्डिनेटर, ट्राई टू बिकम इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस कोऑर्डिनेटर, जो स्टूडेंट टीम की पोजीशंस होती हैं. अगर आपको कोर स्टूडेंट टीम्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ सब कमिटीज, जैसे IEEE वुमेन इन इंजीनियरिंग की सब कमिटी होगी, पावर एनर्जी की होगी, IEEE साइट की भी अपॉर्चुनिटी रहती है. अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आई वुड से कि उस कम्युनिटी के आप चेयर को मेल करो कि आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम दिस सेक्शन एंड आई वांट टू टैप अपॉर्चुनिटीज. तो वो आपको बता देंगे ठीक है, आप ऐसे करके आप एक वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो. देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज IEEE एक्सट्रीम. बहुत फेमस एक कोडिंग कंपटीशन होता है जिसके अंदर अराउंड द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. अगर आपके सीवी में IEEE एक्सट्रीम जैसी अपॉर्चुनिटी मेंशन्ड है, तो इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर यू टू टैप दोस अपॉर्चुनिटीज. अब थर्ड ईयर के अंदर आपने टैप करी इंडियन वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज. फोर्थ ईयर के अंदर आती है आप ट्राई करो R10 की अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, जिससे आप नॉट जस्ट अपना कॉलेज बल्कि आप बहुत सारी कंट्रीज के अराउंड वर्क फंक्शनिंग को आप मैनेज कर पाओ. Okay, so you told that email would be provided to us, but the email is not free now. It is costed $37. $37 कितना बनता है? लेट मी जस्ट कैलकुलेट अभी डॉलर का क्या रेट चल रहा है. 37 into I think it's 91 roughly around that. It's 3,300. Yes. मेरे को भी I think है ना, जब आप IEEE डे के अराउंड आप मेंबरशिप अपनी रिन्यू करते हो, इट्स इन अक्टूबर का फर्स्ट वीक, उस दिन जो चल रहा होता है IEEE डे. तो जब आप उस टाइम लेते हो मेंबरशिप, तो इट इज जनरली हाफ कॉस्ट. आई थिंक $14 $16 इसके आसपास जनरली रहता है प्राइस. तो इट ड्रॉप्स डाउन टू 1,500 1,600. मैं जनरली स्टूडेंट से बोलता हूँ, क्योंकि जब मेरे को भी देखो, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आई नो कि पैसा कितना मुश्किल होता है यार इन मेंबरशिप्स वगैरह के लिए लेना. तो यू गो टू गूगल एंड यू ट्राई टू मेक योर कस्टमाइज ईमेल. सपोज अगर सुमेधा को लेनी है, sumeधा@xyz.org. ORG ईमेल्स बहुत मुश्किल से मिलती है, ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल्स. आप देखना गूगल उसको बहुत ज्यादा चार्ज करता है. इट्स वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी. तो इस अमाउंट में जो आपको एक तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी मिल जाती है, आई फील इट्स वेल कॉम्पनसेटेड. एंड मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था बैक इन 2020, आई टुक दिस मेंबरशिप को 1,600 की आई थी है, 1,600 रुपए की. उसके एक हफ्ते बाद एक कंपटीशन था और उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट करा, आई वन 2,500 रुपीज, क्योंकि इट वॉज फ्री फॉर IEEE मेंबर्स. एंड उसमें पोजीशंस जो थी, आई वॉज वेरी वेल कैलकुलेटिंग कि किस पोजीशन को मैं टारगेट करके इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ. इट वॉज लाइक वेल कॉम्पनसेटेड. एंड जब आप अपॉर्चुनिटीज का पार्ट बनते हो, डिफरेंट लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज का, यू गेट ग्रांट्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड.
Yeah. सपोज अगर सुमेधा किसी कोर टीम का पार्ट है, तो दैट कोर टीम की फंडिंग दे हेल्प यू इन ट्रैवलिंग फॉर दोस टाइप ऑफ इवेंट्स, बी इट एनी सोसाइटी यू आर अ पार्ट ऑफ। या इसके अलावा जब आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हो, तो दे आस्क यू वेदर यू आर एन IEEE मेंबर और नॉट। So that is what I say कि it's very well compensated, it's very well coordinated thing. And 1500 2000 rupees is something that I think we can still afford if we are studying in good engineering colleges. And it's not that expensive. इससे ज्यादा कई बार हम पिज्जा खा जाते हैं if you calculate. It's almost like compensated in those terms. क्योंकि IEEE खुद में एक non for profit organization है. They run on philanthropy. So this is how they just try to take some generous amount of money from members to run the organization. Okay, we'll try to take an email ID for sure. You should, And you should. It's really good thing. and if you want to sum up IEEE and in one sentence, what would it be? I would say it's a life-changing opportunity, very honestly. क्योंकि if अगर मैंने नहीं ली होती and if you would have talked to वो non IEEE वाला Aryan, the perspective, the thinking ideology, the overall processing of the brain would have been very different. क्योंकि फर्स्ट ईयर में आई स्टिल रिमेम्बर मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता था। जब अगर कोई मेरे को लाइक स्टेज पर खड़ा करता था, आई यूज्ड टू फंबल अ लॉट, ऐसे टांगे ऐसे मेरी कांपती थी, माय लेग्स यूज्ड टू लाइक शिवर एंड स्टफ। बट धीरे धीरे ये जो मैंने अपॉर्चुनिटीज को टैप करा, आई फाउंड कि दीज आर इररिप्लेसेबल स्किल्स। आपने सुना होगा AI is laying off lot many jobs, but what I say, if you have irreplaceable skills, you know how to communicate, you know how to sell yourself, you know how to lead different things, lead different teams, they make you ready for very long term careers. And IEEE starting से ये आपको opportunities को tap करने में help करता है. So I would say it has been a life changing opportunity. And जो मेरी friendships हैं, जो मेरे professional connections हैं, या जो मेरी learnings हैं still, या अभी जो मैं और सीखता जा रहा हूँ साथ साथ journey में, they are really worth it. Oh, so you have learned a lot after joining Yeah. IEEE. I feel like learning is a continued process. I am learning a lot. Being within conversation with you all, so it's always a learning opportunity. And at last, what message would you like to give to the students listening to this podcast? So many messages have been delivered in this podcast. But what I would say is, like, rather, this is my very first starting slide of my presentations. If you've heard about that story of frog in the well, students feel like we are the frog inside the well. The well is our biggest territory, but you take a leap outside that well and you saw that the world is a very big place. So what I would say, take a leap outside that well, be that frog जो उसके बाहर jump कर सकता है, and you'll see how big this world is. And मैं एक और चीज बोलता हूँ कि try to increase your risk appetite. Risk appetite मतलब आप अपना risk कितना ले सकते हो, क्योंकि जब आप ज्यादा risk लोगे, you have a bigger reward ratio. Not just rely on campus placements, look out for off campus opportunities. Try to create opportunities for your own rather than waiting कि कोई opportunity आपके पास चल कर आए. तो जब आप अपना वो risk appetite को हल्का 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 बढ़ाते हो, you increase your reward portfolio also. This is one of the messages I would leave the audience with. Thank you so much, Aryan sir, for sharing your experience and valuable insights with us today. I'm sure our listeners now have a clearer understanding of how IEEE can truly make a difference in their student and professional journey. To everyone listening, thank you for turning into IEEE podcast series. Until next time, keep learning, keep exploring, and keep growing with IEEE. Okay, thank you so much. Aryan sir. Thank you so much, Sumedha. अगर और किसी का audience में doubt हो, we can stay for another quick 2-3 minutes. And maybe if it anyone in works the audience, maybe if it works for everyone, can we switch on the camera so that we can capture this sweet memory? yeah, sure. Everyone, you are requested to please switch on your cameras. Sir, I have one doubt. हाँ जी, मानुषी बताओ.
You mentioned how IEEE supports entrepreneurs. So I wanted to ask, does IEEE also provide direct startup funding, or is it through mentorship and grants via program? And also, what is the process to apply for the IEEE Smart Village program? Okay, मैं जितना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ पाया वो ट्राई टू लाइक जस्ट रीसे इट अगेन टू यू कि क्या आई ट्रिपल डायरेक्ट स्टार्टअप फंडिंग देता है, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंडली क्या मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एंड थर्डली यू मेंशन समथिंग अबाउट आई ट्रिपल स्मार्ट विलेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, yes. ओके, तो देखो जब आप आई ट्रिपल एंटरप्रेन्योरशिप के पेज पर जाओगे ना, आई कुड रिकॉल आई थिंक लास्ट ईयर देयर वर सम डायरेक्ट स्टार्टअप फंडिंग्स. इफ नॉट डायरेक्ट, जो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस आई ट्रिपल फ्रेम करता है वो इसी हिसाब से करता है कि जो आपको अमाउंट मिल पाए इट्स रियली गुड. एंड नॉट जस्ट अमाउंट, जो उस कंपटीशन के जो जजेस होते हैं उसके अंदर वो भी आपको अच्छा फीडबैक देते हैं. एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में आपको एक मेंटोर भी देते हैं जो आपके साथ 2 से 3 दिन तक रहते हैं. तो इट्स लाइक आपको वहां से मेंटोरशिप और जजिंग का एक्सेस मिल जाता है. जब आप आई ट्रिपल कोलैबोरा टेक प्लेटफॉर्म पे जाओगे यू कैन जस्ट राइट आउट कि दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड आई एम लुकिंग फॉर मेंटोर्स. Maybe I'm looking for funding opportunities also. So we have so many industry वाले लोग that can connect you with the right opportunities. तो funding shouldn't be a problem. एंड जो आई ट्रिपल ग्रांट्स आती हैं, अगर आप उसके लाइक आई ट्रिपल साइट की बहुत सारी ग्रांट्स आती हैं. एंड आई नो पीपल हु हैव वर्कड इन आई ट्रिपल इन वुमेन सेफ्टी डोमेन या इन एजुकेशनल टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू दोज ग्रांट्स. तो वो ग्रांट्स भी बहुत जनरस अमाउंट की होती है. यू कैन यूज दोज टाइप ऑफ थिंग्स फॉर योर प्रोजेक्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी. So I think maybe not direct, but there are so many indirect opportunities that you can tap into. Got it? So what is the process? I couldn't get you. Can you come again? So how to find the scholarship links? Okay. So, you know, there is this one PDF that I have. Maybe I can share it with the organizers later on, and you can just share it across the team. So उस PDF में almost सारी scholarships है जो IEEE issue करता है. I think there are more than 300 scholarships. I just note it down. I'll just share it with the team later on. If not, maybe you can just search these key terms: IEEE, Human in Engineering, IEEE Entrepreneurship, IEEE Power in Energy Society, IEEE Computer Society. Most of the student centric opportunities और जो scholarships होती हैं वो इन्हीं सब societies की होती हैं. And ये बहुत generous amount में देते हैं, so you can easily tap into these scholarships. And you also ask about IEEE Smart Village. So I remember some of my friends, what they did, they made solar powered lamps. IEEE Smart Village की तरफ से ही कुछ grant आया था. They made these solar powered lamps and they distributed it nearby villages में मेरे college के. तो Smart Village, as the name suggests, villages को smart करने की technologies के around ही काम करते हैं. And there are again some grants that you can tap into. All right, Manushi? Yes. Perfect. Anyone else? If anyone else any doubts? I think there are no doubts from anyone. No doubt, sir. Perfect. Chalo, Sumedha. Yes, sir. Then we can just wrap up this session. See you some other time. Yes, sir, sure. Chalo. Okay. Thank you so much, AITR, for giving Thank you this so much, sir. opportunity. Thank you so much, everyone, for Yes, sir. joining. See you some other time. Have a great weekend. Bye.